students, I am Professor Dr. Veena Diwan from Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Land Governance, जयपुर। कैसे हो आप सब? I hope all of you are safe. So, we will start our topic today's session, Trade Union Act 1926. Trade Union Act 1926. This act may be called the Trade Union Act 1926. It extends to the whole of India. It shall come into force on such date as the central government may, by notification in the Central Gazette, appoint. Some important definitions in this act. The appropriate government, the most important definition. Appropriate government. Appropriate government means, do you know? In relation to trade unions whose objects are not confined to one state, the central government, and in relation to other trade unions, the state government, unless there is anything repugnant in the subject or contest. एक्चुअली में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों शामिल होते हैं। क्लियर? सेकंड जो डेफिनेशन है वो आती है इसमें एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी by whatever name called to which the management of the affairs of a trade union is entrusted. Office bearer in the case of a trade union includes any member of the executive thereof, but does not include an auditor. Prescribed means prescribed by regulations made under this act. Registered office means that office of a trade union which is registered under this act as the head office thereof. Registered trade union means a trade union registered under this act. जो इस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड होगा वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कहलाएगा। करेगा कौन? रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 and includes any additional or deputy registrar of trade union. ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। in relation to any trade union
the registrar appointed for the state in which the head or registered office, as the case may be, of the trade union is situated. Trade dispute, very important definition. Trade disputes. Trade dispute means any dispute between employers and workmen, or between workmen and workmen, or between employers and employers, which is connected with the employment or non-employment, or the terms of employment or the condition of labor of any person. And workmen means all persons employed in trade or industry, whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises. Clear? तो ट्रेड ये किसी के भी बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर बिटवीन एम्प्लॉयर, वर्कमैन बिटवीन वर्कमैन, या एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। समझ में आ गया? चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के साथ हो और या नॉन एम्प्लॉयमेंट के साथ हो। क्लियर? नेक्स्ट आती है ट्रेड यूनियन। Trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers, or between workmen and workmen, or between employers and employers। तो ये टेम्पररी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इनके बीच का, और परमानेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर इम्पोजिंग restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more trade unions। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ये सब थी important definition of Trade Union Act 1926, provided that this act shall not affect, write down, any agreement between partners as to their own business, any agreement between an employer and those employed by him as to such employment, or any agreement in consideration of the sale of the goodwill of a business or of instruction in any profession, trade or handicraft। Is it clear?
only the persons engaged in trade or business can form trade unions. एक केस था इसमें रंगास्वामी वर्सेज रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 19 ट्रेड यूनियंस AIR 1962 Madras 231. Primary purpose of a trade union is collective bargaining. Bank of India Employees Association versus Reserve Bank of India 1983. Is it clear? कोई प्रॉब्लम किसी को भी यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की. तो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज completed. Now, I hope you all have understood the topic. यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली उससे पूछ सकता है. I will tell you some important questions regarding this topic which will beneficial from your examination purpose. कुछ important questions मैं आपको देती हूँ इससे रिलेटेड जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर कर पूछे जाते हैं. क्लियर? प्लीज राइट डाउन दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक. नंबर 1, explain the following definitions. Registrar of a trade union, trade dispute, trade union, appropriate government, etc. कुछ भी मतलब ये जो जितने भी डेफिनेशंस दिए हैं इनमें से कोई सी भी डेफिनेशंस या मतलब 3-4 डेफिनेशंस आपको अक्सर कर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. क्लियर? इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिस्प्यूट एंड ट्रेड डिस्प्यूट. इन दोनों में डिफरेंस भी मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाता है. क्लियर? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, you can ask me. You can write me. You feel freely to contact me. Clear? आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम. बट ये डेफिनेशंस जो है वो आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू ऐड दैट you should also make use of new case laws, illustrations, etc. आपको इसमें नए केस लॉज भी देने चाहिए अपनी राइटिंग में, मतलब अपने आंसर्स में इलस्ट्रेशंस देने चाहिए. राइट? while writing your answer, if you need help, you can send me your answer
so that you can uh, you can send me. I can check your answer and tell you the changes if needed. So the class is now over. Thank you for listening me. Stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you so much.